someone is going to start his or her entrepreneurship journey. So what are the qualities or what are the skill set he or she should look for? ठीक है, मतलब कौन कौन से के पास होनी चाहिए और कौन कौन से देखनी चाहिए, आपको कौन सा लगता है? यार सबसे बड़ी क्वालिटी, सबसे नंबर 1 इज़ द सिंपल स्पिरिट ऑफ नेवर गिविंग अप. बाकी सारे टेक्निकल स्किल सेट्स, मार्केटिंग स्किल सेट्स, ऑल द थिंग्स यू विल कीप ऑन लर्निंग. लेकिन अ पर्सन हु इज़ नॉट रेडी टू गिव अप इज अल्टीमेटली गोइंग टू बी द पर्सन जो कि इज ऑलवेज गोइंग टू लर्न अ न्यू थिंग्स. क्योंकि इन योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी आप ऑन अ डेली बेसिस कुछ ना कुछ करने में फेल हो रहे होगे. नॉट जस्ट व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट बट व्हेन यू आर डूइंग वेल, व्हेन यू आर डूइंग एक्सीलेंट, आप हर समय कुछ ना कुछ फेल हो रहे होंगे, राइट? सो दैट स्पिरिट ऑफ योर्स दैट यू आर नॉट गिविंग अप is the thing that matters, and that spirit has to continue in every single place. आप जिम में हो, आपको टारगेट दिया है 20 पुशअप मारने का, जस्ट एन एग्जांपल, तो आप 18 पे गिव अप नहीं कर सकते, आप मारोगे वहाँ पे 20 पुशअप. थोड़ा सा गैप ले लोगे लेकिन मारोगे. सो द पर्सन हु इज़ नॉट रेडी टू गिव अप इज समबडी is a tailor made for entrepreneurship, or you have to bring in that trait into yourself. And the thing कि you have to consistently show up. You cannot depend on the fact कि आज मेरा मन कर रहा है काम करने का तो मैं काम करूँगा, आज मेरा मन नहीं कर रहा है तो मैं नहीं करूँगा. That's not how things work. You have to show up and you have to bring in that positive face into the work, which actually brings in the energy into your other team members as well. All the time. Does not matter आपके personal life में क्या चल रहा है. Don't care. उसके बाद you need to think about the things कि what I'm doing, is it something which is scalable or not? And the skill set that I'm acquiring is something which will matter in the let's say not just right now, but even let's say years down the line. So that's something which matters. But before that, these two traits you need to bring into the picture, because the platforms, all the things will keep on changing. Just a quick example, maybe आपने let's say master करे TikTok को, बंद हो गया 1 साल पहले. आपने मास्टर करा let's say गूगल एल्गोरिथम को, गूगल एल्गोरिथम ने नया एल्गोरिथम निकाल दिया. So ultimately platforms will keep on changing, right? So your trait of always getting down and then getting back up again is the thing that will matter all the time. Got it. And you just said कि mindset, and then अगर आपका वो never give up mindset होगा बस नहीं, तो आपको वो next level वाला mindset create करना पड़ेगा. The next question here is कि how to create a strong mindset. The second question here is कि अभी जिस phase में right now अभी आप हो and you are building a $1 million company, multi-million-dollar company, right? तो उस फेज पे आपका माइंडसेट कैसा है? माइंडसेट सबसे पहली चीज़, अपने जितने आपके ऐसे लोग हैं जो आपको पता है कि आपके अराउंड वो नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं या आपको ऐसी चीज़ें बातें करते हैं कि यार ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, देयर फर्स्ट रिएक्शन टू एनीथिंग इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव, इट्स नॉट ऑप्टिमिस्टिक. आपको उनसे दूर रहना है. And especially it's not just that, even the fact कि they are not talking about growth, they are not talking about growing in life, आपको उनसे भी दूर रहना है. So it's not about उनसे distance maintain करना है, it's about cutting them down, दूर रहना है. So that environment change करना है. That's number 1, environment change करना है. The same environment is gonna be changed in your physical life, in your social life. आपके social media में वो सारे लोग आपके connect में नहीं होने चाहिए. It's as simple as that. आप स्टॉप फॉलोइंग. आपको किसी के साथ एक्चुअली में जेन्युइनली अगर किसी से कनेक्टेड रहना है, मेरे जो एक्चुअल फ्रेंड्स हैं भाई, मैं उनसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट रह सकता हूँ. आई डोंट नीड कि मैं सबको सोशल मीडिया पे फॉलो करूँ. एंड एंड आई लुक एट 10 ऑफ डिफरेंट थिंग्स. कई लोगों को मैं देखता हूँ 1000 लोगों को फॉलो कर. आप करते क्या हो यार सोशल मीडिया पे? ये योर सोशल मीडिया इज़ फॉर क्रिएटिंग बिजनेस. मेरा सोशल मीडिया का जो डेली टाइमिंग है वो हार्डली 15 से 20 मिनट का होगा. आई जस्ट गो देयर, पोस्ट कॉन्टेंट 3 times in a day and that's it. I'm a creator. मेरे को किसी का वो फॉलो नहीं करना है. And maybe when you are starting out, maybe some good self-help books are going to help you. Maybe some good self-help podcasts are going to help you. But once you are into this zone, then motivation will take a backseat क्योंकि you become self-motivated, and then the strategies and the skill sets will take the most important seat. Got it. The first one is environment change करो. Second चीज़ क्या है कि you need to feed your mind with the positivity, with the books, with the good content, with podcasts and so many other things.